हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम कैटलिस्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। आज हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डे देखा बैंक निफ्टी पे। जो हमारा अंदर की भाई एक ट्रेंड लाइन चल रही है। दैट ट्रेंड लाइन इफ इट ब्रीचेस इट विल टेक अ सपोर्ट, राइट। अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखेंगे, मैंने कल ही कहा था 43,080। इनफैक्ट मेरा मॉर्निंग टेलीग्राम में आ चुका था सपोर्ट लेवल्स 43,080 टू 43,030। अगर उसके बीच में अगर आपको बुलिश कैंडल मिलती है, आपको लॉन्ग जाना है। एंड मार्केट ने आज वैसे ही किया। मार्केट में एक्चुअली एक बुलिश कैंडल आई थी, फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल, जहां से मैंने लॉन्ग सजेस्ट किया था। वो ट्रेड एक्चुअली इसने 1:3 से ज्यादा दिया। उसके बाद बीच में मैंने एक और एक ट्रेड दिया था अबाउट 250 फॉर द टारगेट्स ऑफ 43,300। वो भी दोनों ट्रेड सक्सेसफुल रहे बैंक निफ्टी में। वी हैड अ गुड डे इन ट्रेडिंग बैंक निफ्टी, राइट। नाउ व्हाट इज द सेटअप फॉर टुमारो? डेली चार्ट एक्चुअली इज सेइंग नथिंग। अगर आप देखेंगे बुलिश ट्रेंड था, मार्केट ने सपोर्ट ढूंढा, मार्केट ऊपर गया, राइट। 15 मिनट का चार्ट अगर आप देखेंगे, इंटरेस्टिंग पैटर्न इमर्ज होता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसने मंडे, सॉरी ट्यूसडे, राइट, मंडे छुट्टी थी, एक बुलिश कैंडल बनाया, फिर पूरा दिन इसी रेंज में रहा। आज भी अगर आप देखेंगे इसने एक बुलिश कैंडल बनाया एंड लगभग जो रेंज क्लोजिंग कैंडल की थी कल की, उसके बीच में ही रही। मार्केट अभी इन दो बॉक्सेस के बीच में ही ट्रेड कर रहा है, मगर इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, राइट। सो ऊपर का जो कंसोलिडेशन था फॉर at least this expiry, right, we can say it looks like it was a distribution, right. I can't say acceleration, looked like a distribution, right, to me. If I see this trend line has connected most of the points in the morning, it swept this trend line and went up, right, but it faced a resistance here, right. Now importantly, right, tomorrow upside for me, right, is capped. Why it is capped? ये point जो है, right, 43,500 will naturally be a resistance. अगेन आज ऑप्शन स्टेटिस्टिक्स वगैरह सब देखेंगे आप, कोई मूवमेंट नहीं हुआ। दोनों साइड पुट राइटर एंड कॉल राइटर ने अपनी पोजीशन हल्की ही की है, तो वहां से आपको कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा नहीं। फोक्स रिमेंबर, पीएमआई डेटा था, आईएसएम सर्विसेज पीएमआई डेटा था। um, अभी 11:30 को एफओएमसी मिनट्स आएंगे, एंड वी विल हैव जेरोम पोवेल कमिंग एंड एड्रेसिंग दी US media, right? And importantly, the world markets are looking at the speech, not in terms of what rise they are going to give now. Everyone is expected a 25 basis point hike, but importantly, right, what is his commentary going to be? It is very interesting this time because banks, right, have been the regional banks, as I explained in the live market. Regional banks have actually showed a lot of weakness yesterday, right? With SVB being acquired by JP Morgan Chase and FDIC insuring the bonds, you see that there is some nervousness that the regional banks are showing there. um, थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा डेटा, हम थोड़ा वेट करके आज देखेंगे। आई विल ऑल्सो ट्राई टू एनालाइज एंड शेयर व्हाट इज माय व्यू बेसिस वट एवर हैज बीन कमेंटेड इन द स्पीच, राइट। बट अगर आज आप पूरा दिन देखेंगे, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के नीचे ज्यादातर देर, अगर आप देखेंगे 11 बजे के बाद ये मार्केट इसके नीचे ही था। Yes, it went up in the last 30 minutes, but that was more to lighten up the position, right? Now, given these two boxes are formed, मेरे लिए शॉर्ट का ट्रेड बनता है बिलो 43,188, मेरे लिए लॉन्ग का ट्रेड बनता है अबव 43,370। लॉन्ग में मेरे टारगेट ज्यादा नहीं होंगे। आई विल एम फॉर 43,480, 43,530, राइट, एज टू टारगेट्स, बट आई विल बी वेरी कंजर्वेटिव। अगेन, we are in a bullish trend. I am not looking at shorting the market immediately. The way the price pattern and chart patterns are set up, right, I personally feel it, if it opens a gap up, and at gap up, right, the selling pressure may immediately start. And if I see a bearish candle, right, I would like to take a put trade with 20 to 25% of my quantity. Anything below this level, 43,188, opens up the door for 43 somewhere here, right? I think now this support, again, there will be a temporary relief here because it's a round strike, but I am expecting these levels to be shown if it falls below 43,180, right? This trade will be good, right? क्योंकि यहाँ पे हमें 150 से 200 पॉइंट की मूवमेंट बहुत तेजी से मिल सकती है, और इसमें हमारा ऑप्शन प्राइस भी बढ़ेगा, राइट। सो आई होप फ्रेंड्स बैंक निफ्टी का चार्ट क्लियर है। अभी हम चलते हैं
इसके कंपोनेंट्स पर, राइट। अगर आप कंपोनेंट्स देखेंगे, कल भी हमने एनालाइज किया था, एचडीएफसी के सपोर्ट से अगर आप देखेंगे आईसीआईसीआई एंड एक्सिस बोथ कैन गो अप, बट नाउ worrying so axis has taken a support, right now axis has a resistance at 865, support at 854. For me, if it opens flat, it will continue in this range, right? ICICI looks good. It looks promising to me, right? Anything above 925, this one should help the bank nifty go up, right? I am bullish on ICICI, but if I look at it, right, Axis will be range bound. Now, HDFC Bank, the hard hitter, right, is showing a trend line breakout. Again, I'm expecting a move till 1700, 1720. But if it starts opening below 1685, it opens up for 1670, right? On the day of expiry, 15 days movement, 15 points movement in HDFC Bank actually impacts Bank Nifty a lot, right? So again, if you see, the upside is capped, downside looks more probable in HDFC as well, right? Coming to Kotak, Kotak showed a good candle. I think many of our members had taken this. कोटक के लिए दोस्तों स्टोरी बहुत सिंपल है, कंसोलिडेट करेगा ये अपने, अगेन आफ्टर द क्वार्टरली रिजल्ट सीजन, राइट, जनरली डोंट एक्सपेक्ट मच मूवमेंट। कोटक इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर ही ऊपर चल रहा है, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रीच नहीं करता है यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड नहीं बनता है, बट अभी ये कंसोलिडेट ही करेगा क्योंकि ये एवरीडे ओपन होता है, एक बड़ा कैंडल बनाता है और उसी रेंज में थ्रू आउट द डे ट्रेड करता है, राइट। चलते हैं एसबीआई पे। एसबीआई अगेन ओपनिंग कैंडल उसी रेंज में पूरे दिन प्ले किया एसबीआई ने भी। एसबीआई फॉर मी टेम्पररीली लुक्स लाइक अ गुड कैंडिडेट टू करेक्ट टिल 564। सो इफ आई लुक एट इट, राइट, मुझे एच डी एफ सी, एस बी आई एंड एक्सिस रेंज बाउंड लग रहा है, कोटक रेंज बाउंड लग रहा है, मगर एच डी एफ सी, एस बी आई कैन पुल द इंडेक्स डाउन if the shorters are able to manage ICICI at these levels. You could see some bit of downward slide, right, after opening. Everything depends on how the commentary comes out, given it is associated with the banking troubles which the matured economies are facing, right? This one could be interesting for bank nifty. कल बैंक निफ्टी में वोलाटिलिटी बहुत ज्यादा होगी, अगर इंडेक्स गैप डाउन खुलता है तो देयर कुड बी अ बिग बिग रेड कैंडल विच वी कुड सी, राइट। इंडसइंड फ्लैट, नथिंग मेजर टू से. Other thing, right, that friends, I wanted to point out to you guys was, if you look at this particular thing, right, now any event, right, whenever it comes, India VIX, right, typically jumps, right. I was hoping for a good movement on India VIX throughout the day, but today surprisingly, right, India VIX continued flat. Generally India VIX rapidly increases by 15-20% on just before expiry. इंडिया विक्स फ्रेंड्स डिड नॉट राइज, राइट। मॉर्निंग से ये गिरता ही रहा। आई शो अ 15 मिनट चार्ट। मॉर्निंग में ओपनिंग के बाद ये जो हल्की सी यहाँ पे बढ़त आई थी, ये गिरता ही रहा। These are too low of VIX level, right? Right now, everywhere globally there is panic, right? What I'm failing to understand is our VIX is not rising, which says that markets are looking at stability, right? Are feeling stable right now. So again, keep an eyes above 12.2, right? If the VIX opens somewhere here, right? So if tomorrow, if there is a negative news, right? VIX may open somewhere here, 13, 14, right? If I go to the daily chart of VIX, right? Do you see this? VIX में भी एक अच्छा सा ये विक्स 16 इसके ऊपर ना, ये ट्रैप कैंडल के ऊपर 13.2 के ऊपर ये 16 तक जा सकता है. This will be very good for put buyers, right? And low VIX scenario में option buying becomes easy, option selling becomes difficult, right? Your small premium with the movement, right? Delta movement अच्छा होगा. ध्यान रखिए इस पे भी. मुझे विक्स देख के आज आई वाज सरप्राइज कि विक्स बढ़ा नहीं जितना बढ़ना चाहिए था. So before a movement and an important movement like this, I felt, sorry, before an event, right, an important event like this, I was hoping the VIX to actually be touching 13.3. It did not, right? And even in the end, it did not increase, right? So somewhere it meant that market participants have done what they wanted to do. They are not much worried about how they have not created more positions, is what I felt, right? So we'll get to know tomorrow. I will update a trade on Telegram, right? Tomorrow, guys, it's tricky, very tricky, right? अभी ये चार्ट एक्चुअली कॉल के लिए, राइट,
एक रेजिस्टेंस बता रहा है 370 380, राइट? अगर इन लेवल्स के बीच में कहीं खुलता है, सॉरी, इन लेवल्स के बीच में कहीं खुलता है बिटवीन 390 and 337, right? You may, and if the market opens flat and consolidates, right, you may get a move till 420, 430. The movement is small. Try to capture it at 360, 365 with a stop loss of 340 and try to trade it till 420, right? In case there is something else, I will update in the Telegram. First 15, 20 minutes, don't trade. Tomorrow, first 15, 20 minutes, actually you would end up with big losses, which you could not recover in the market later, right? Don't attempt it. Um, Again, given this is a 43,000 C, right? I'm only looking at institutional strikes, 43,000 C, 43,500 P. P यहाँ पे इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मेशन आ रहा है. लेट मी सी दिस ट्रेंड लाइन. वेट, ओके ओके, रादर दिस लुक्स इंटरेस्टिंग टू मी. ओके, ये पी ट्रेड ना मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है फॉर अ सिंपल रीजन. यहाँ पे एक असेंडिंग लाइन आ रही है, यहाँ पे सपोर्ट भी ले रहा है टुवर्ड्स द क्लोजिंग प्राइस ऑफ सेकेंड, राइट? Any movement above this level, right? If it consolidates and moves above 317, you have targets of 393 and 424, right? Stop loss will be small. It will be somewhere around 286 to 290. I'll update it in the live market. But for me personally, looking at the option chart, the way it has taken support, I am looking at a movement in 43,500 PE. अगर कल फ्लैट खुलता है या थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है, फिर कंसोलिडेट करता है फॉर 10 to 15 minutes, आई थिंक we should have a watch on 43,500 P. It will give a good movement, right? Friends, that's it for today from Bank Nifty standpoint. We have covered components, few option charts that I feel are important for tomorrow. Stick to highly liquid option strikes, the institutional strikes. It will be good, right? Bank Nifty may confuse tomorrow. Don't extend yourself. Event के बाद का ट्रेडिंग है, कल हमारा वीकली एक्सपायरी भी है, तो इम्पोर्टेंस उसकी ऐसे भी ज्यादा है. I will try to come live with the expiry trade setup. Last time, many people made fantastic money using live analysis that we did, right? I will try to see if we can come live at that time. Importantly, have a broadcast sharing screen, right? So that more and more people can join, right? If you guys are liking our analysis, please subscribe to our channel on YouTube. Please share our link to your friends. Invite them to our Telegram group. It's a great motivation for us to see the group and community growing, right? Of late, we are seeing good participation from our members and a lot of positive feedback coming from everyone, right? So we would like to continue the momentum there, right? आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.